Hello Capital TV, this is Amna Butt. Welcome to my studio 90H Gulberg 3 Lahore. 90H Gulberg 3. You will find us on Instagram by the name of Amna Butt the Art Room, and you'll find my website link there too. So this is actually fiberglass. बहुत सारे लोग sculpture मांगते हैं. So this is called Mystic. It's a Rumi inspired collection. और ये फाइबर ग्लास है. और बहुत से लोग हमें ये भी कहते थे कि हमें कुछ स्कल्पचर भी चाहिए और पेंटिंग भी चाहिए. तो ये एक नया हमने फॉर्म निकाला है जिसके अंदर एम्बॉस्ड पेस्ट से हमने वही अपने खूबसूरत 4 घोड़े बनाए हैं, पीसफुल वॉरियर्स. ये देखें, ये बिस्मिल्लाह है. दिस इज रिटन 786. और बिस्मिल्लाह, बेशक हर काम अल्लाह ही के नाम से शुरू करना चाहिए. सो आप देख सकते हैं ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं का कॉन्सेप्ट है, वही बनाई गई है. और पीछे हमने पूरा उनकी मॉस्क दिखाई है. आगे हमने पूरी अपनी खूबसूरत सी नकाशी की है. सो दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और दरूद पाक हमने इसके ऊपर लिखा है. कॉन्सेप्ट है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी का, और इसके ऊपर हमने बड़ी ही हसीन नकाशी की हुई. और आप देखें वो लिखा हुआ दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आप देखें इसके ऊपर किस तरीके से हमने रेज़न फेंका है. हमने इतनी ज़्यादा रहमत दिखाई है बिकॉज़ वो रहमतुल आलमीन भी है. ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट पेंटिंग इसलिए है कि मुझे लगता है ही इज़ सो काम एंड कंपोज्ड एंड सॉर्ट ऑफ लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड एंड सो एम आई. So that's why I really like it. And plus इस पे इतने खूबसूरत strokes लगे हुए हैं, and then it's a beautiful black horse and I really like it. I think artist बड़े ही sensitive और community है, all sort of artist, और हम हमेशा art बनाते हैं और इतना personal होता है, फिर भी हम दुनिया को दे देते हैं to enjoy. So ये relationship series है और मेरे बहुत close है. मुझे लगता है relationships are not for sale. So this is my collection and मुझे लगता है ये मैंने अपने लिए बनाया है. मसलन आप ये देखें, ये siblings के ऊपर है. उनके इख्तिलाफात के बाद भी उनकी जो souls हैं वो united हैं. एंड इसके अंदर फ्रेंडशिप दिखाई है कि जो उसके पास नहीं है वो उसके पास है, और जो उसके पास नहीं है वो उसके पास है. और फिर मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग रोप दिखाई है that shows infinite bond of this beautiful friendship. So this is the new collection. This is the winter collection, और इंशाल्लाह soon आप हमारी feed पे देखेंगे because we've launched art furniture and we're doing furniture पे tables हैं, chairs हैं. ये बड़ी खूबसूरत वोक की painting है. हमारे carpets हैं, wall hangings हैं. We have throws, we have blankets. So this is a part of the new collection also. So ये मेरी new winter collection है 2022. This is actually mixed media on leather, और मैंने ये थ्रोस की फॉर्म में भी बनाया है. प्लस ये ब्लैंकेट्स हैं, वॉल हैंगिंग्स हैं, कार्पेट्स हैं. आपको हर तरह की कलेक्शन मिलेगी. एंड दिस इज ऑल्सो इन आर्ट फर्नीचर एंड दिस इज माई न्यू कलेक्शन. यू गोना सी इट वेरी सून ऑन माई पेज. ये मोमेंट सीरीज है और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. आप देखें इसके ऊपर कैसे हमने मिक्सड मीडिया का इस्तेमाल किया है. दिस इज़ ब्लैक एंड दिस इज़ गोल्ड लीफ ऑल्सो. और कैसे हज़रत अली का नाम विर्द में तस्बीह करके लिखा गया है. वाइट टेक्सचर्स के साथ उनकी रहमत दिखाई गई है. उनका नाम ये अलग से काट के लिखा है. ये जुल्फ़कार दिखाई गई है. और बिकॉज आई हैव सो मच लव एंड रिस्पेक्ट इन माई हार्ट फॉर हिम, दिस इज शोइंग माई लव, दिस रेड स्ट्रोक एट द एंड. ये वही मेरे खूबसूरत से 4 पीसफुल वॉरियर्स हैं. और ये लेकिन सनसेट भी दिखाया हुआ है बिकॉज बहुत सारे लोग कलर पसंद करते हैं. दे लाइक वाइब्रेंट पेंटिंग्स. So I've shown lots of colors in this, and this is one of my very top selling piece. I always say deen and love inspires me, and मैंने एक तस्वीर देखी थी which was James Webb Space Telescope की कोई थी, and this was like a speck of the universe, a cluster of galaxies. और मैंने देखा कि अल्लाह ताला तो अल-मुसव्विर हैं, कितने बड़े आर्टिस्ट हैं. तो उस इंस्पिरेशन में मैंने ये पेंटिंग बनाई है. So this is just showing part of your galaxies in the universe, the world beyond, जो हम देख ही नहीं पाते. Hey Capital TV, welcome to my studio. This is 90H Gulberg 3. My name is Amna Butt and my brand's name is Amna Butt the Art Room. You will find me on Instagram with Amna Butt the Art Room, and you'll find my website there as well. Thank you. Hi Amna, how are you? Hello, I'm very well, and how are you?
So just want to mention this, Kate, is so difficult to finally get Amna Bhatt to give us interview because she's been so busy with the art room. Amna, it's been a pleasure having you with us, and I just hope that this interview goes as well as we planned. Yeah, inshallah. Okay, so I want to know, who is Amna Bhatt? How would you describe yourself as a person? Honestly, how I would describe myself, I'm a very emotional person, very sensitive, very passionate, uh, impulsive, intense, but I'm a people's person. So I lead with my heart, and I think my biggest power is my love. But when it comes to painting, so phir I think I live, I breathe, I paint, I celebrate emotions. I enjoy emotions, and that's how I paint. So I that's think how I define myself. That is beautifully worded. And how do your friends see you? My friends actually see me, वो उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा funny भी हूँ, but बहुत ज़्यादा emotional भी हूँ. And I make very little friends, but when I make friends, then I'm like this with them. फिर वो नहीं होता कि जान, दिल, सब उनका, ऐसे वाले, यारों की यार. Oh, yeah, so you're that person. Okay, so I have a little bit of an ice-breaking question. हम बड़े movies में देखते हैं कि when two people are meeting, they say, oh, let's just go to an art gallery for a date. So what do you think about this culture? Should it be like also propagated in Pakistan? Where is it a good space to actually meet that one person or actually go on a date and see where it takes on? Because हम बड़ा movie में देखते हैं, like I would say कि I used to watch these art films, these French films, and they go to a date पे वो gallery में जा रहे होते हैं. So do you think this is a culture? I mean, art galleries can be a good space for actually first-time lovers to meet, or even lovers to meet all together, possible lovers to meet. I love your question. This is the first one. Like I said, ये best मुझे इस तरह का सवाल अभी तक किसी ने नहीं पूछा. But actually, when I'm thinking about it, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल, why not? I think if you connect, that's my way of thinking, that if you connect on music or food or art or poetry, then you've met your soulmate. So maybe you can meet someone in the gallery. Okay, so nice idea. Like these people must have a shared interest of art, like that is very integral. I think yes. Art of any form. It doesn't need to be specifically what I do. It can be poetry. It can be, any genre of art. But if you connect with, I personally think, like if you connect with music or food or even religion for me or poetry, culture, anything, तो मुझे लगता है कि जितनी similarities होती हैं आपको अपना soulmate मिलता है. But I really think coming on dates in the gallery is a cool idea. I haven't thought of it that way. So maybe शायद आपके art room maybe perhaps it's a meeting place for lovers. Who knows? Once I thought of this. Somebody was asking me कि आप इधर tables रख लें and we'll have like nice cup of coffees और लोग आए और ये culture पाकिस्तान में नहीं है ना. I have a huge space. I have a huge gallery. I'll show you later. तो वो बड़े मजे से मैंने कहा, लेकिन वो जिस तरह के लोग आ रहे थे, I was like, I can't do this. I'm good with appointments. Not the best idea. Okay, so coming to not the best idea. That's cool one. Okay, so Amna, what is it that you enjoy the most? You know what I actually enjoy the most? I enjoy making life stories. Like you can see behind me. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी को देती हूँ, जैसे आप हो for instance, आप आके मुझसे काम बनवाते हो, तो you would commission a particular art for me. So I would like to sit down with you, have like a heartfelt conversation, invite you to my studio, give you a list of questionnaires, and then first understand you as a person. जैसे बड़ा therapeutic way होता है. आपको पहले मैं समझूंगी, आपकी अपनी struggles हैं, अपनी life है, अपनी जिंदगी गुजरी होगी, आपकी अपनी agony है, अपना pain है, अपना joy है, अपना struggle है. So मैं आपको जब अच्छे तरीके से समझ जाऊंगी, फिर मैं कुछ ऐसी चीज क्रिएट कर सकूंगी आपके लिए जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे, जो आपकी वाइब होगी, जिससे आप एफिलिएट करोगे. Because you should, that's what I think. Like this one, I painted for myself and this is my own life story. It's called अधूरी ख्वाहिशें. तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि सब मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने का मजा देती हैं. तो मुझे मजा आता है इसका बहुत ज्यादा कि अगर मेरे क्लाइंट स्पेसिफिकली आए तो मैं उनके लिए कुछ ऐसा बनाऊं जो उनकी जिंदगी है, और वो जब घर लेके जाए मेरा आर्ट पीस तो एफिलिएट कर सके, उनको लगे कि हम अपना हार्ट एंड सोल खरीद के लाए हैं, आर्ट पीस नहीं है. Amna, that's what I enjoy. And I think you've encapsulated it so wonderfully well. So I just feel that you're not just good as an artist, you're actually a very, very good eloquent speaker as well. I don't think you find both, because usually जो artists होते हैं वो बहुत introvert किस्म के होते हैं. They are perhaps not good with words and they express better with their work.
But I feel like we're halfway through this interview, and I feel that you're also very good of a speaker. So that's saying something. Okay, I think I'm an extrovert. You, I think that works. I think it commercially is okay, I guess, because you need to really connect with your clients also. You know, to what things going to get them talking, to hear what they say. For that, you need to talk to them also. So I think that's and then you know when I'm connecting, even for you, that जब आपने Zoom का कहा, मुझे अच्छा लग रहा था कि आप खुद लाहौर आओ, मैं आपको मिलूं. मुझे लगता है कि हम personally लोगों से जब connect करते हैं, उनकी vibe catch करते हैं, that's how we actually make real connections. Yeah. And then I can actually make, you know, a better piece for you, something you can enjoy. That's why I like meeting my clients and giving them all my time, because I'm investing my whole art and my life into my every piece जो भी मैं बना रही हूँ. तो मुझे मजा आता है कि अपने clients को मैं पहले समझूं, उनको time दूं, फिर उनके लिए कुछ create करूं. Wonderful. Okay, so coming back to your project, the art room, which is not just a project, it's a whole gallery. So when did this idea hit you? And what was the process behind actually going out there and putting in like a whole art gallery of yours? So please walk us through this process, because I want to know so much more about it. I'm going to shoot you with questions in between, so I apologize if I interrupt you, but just do tell us. Acha, Athiya, I have been painting since I don't even remember. 15 years now, over a decade. But 5 saal pehle, I had this, you know, a lot of clients coming and wanting to see my place. I was working from home, like in a room. That's why I called it the art room. घर से काम कर रही थी. But फिर बहुत सारे clients होते थे, घर आना चाहते थे, and I wasn't very open to bring them into my home all the time. So that's when I, you know, set up a gallery 5 years back. And then I slowly, you know, I have an amazing team, or artists on board. Like, up to mashallah, my gallery is a home to about 600 paintings, and it's a home to my heart as well. So अभी हमने recently ये बहुत अच्छा किया है कि हमने merchandising introduce की art room में, हमने art furniture introduce किया है, और अभी आप January 2023 में इंशाल्लाह हमारी winter collection launch हो रही है, which is a new series of throws, of carpets, of home interiors also. I slowly start, you know what, yeah, I did, you know, it wasn't an impulsive decision. A lot of people think, you know, coming from you know, an influential family or like this, people think कि इसको तो बस शौक होगा, इससे खोल ली gallery. ऐसा नहीं था. It wasn't an impulsive decision. It was very well thought. जब मुझे लगा कि मैं actually काम कर सकती हूँ, मैं अपनी टीम की सैलरीज निकाल सकती हूँ, मैं डेली यहाँ आ सकती हूँ, एंड मैं यहाँ बैठ सकती हूँ और इसको चला सकती हूँ, तब मैंने ये गैलरी खोली. और फिर मुझे लगा कि ओके, नाउ आई एम डूइंग ग्रेट इन पेंटिंग, सो आई स्टेप्ड इन, केम इनटू फर्नीचर, इनटू आर्ट फर्नीचर, एंड देन स्लोली इनटू, यू नो, वी हैव स्कल्पचर्स, वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू आर्ट. Alright, that's nice. So you've got sculptures as well. That's like curated by you? Oh wow. Yes, but I'm not a sculpture artist, to be very honest. I enjoy learning the process, so I have a whole team who does my sculpture. Oh, I get it. Okay, so I have one very particular question. I'm going to read it out for you because I don't want to mess this up. So Amna, do you feel the appreciation and taste for art, visitations to gallery, and the overall art scene in the country still needs a guided push? मतलब आपको लगता है कि इसको और तरह से थोड़ा से push की जरूरत है? And आपको क्या लगता है कि do you think कि art room, where does art room stand here? How does it play a role in strengthening the art scene in the country? So, I mean, because it's a big responsibility, because I think you are one of the few good, you know, like curators in the country. So I think it also comes with a responsibility. How do you feel the art room plays a role in kind of fostering this culture in the country? I think this is a very good question. हमारे generally country में art की इतनी ज़्यादा मतलब appreciation तो है, but जितनी level पे I think respect artist community को मिलनी चाहिए, because मुझे लगता है सारे artists for that matter, be that you, be that me, anyone who's actually creating art, musician, a poet, even a chef, you know, we're creating something so personal and then we give it to the world. है ना, ऐसा ही होता है ना, हम अपने लिए कुछ बनाते हैं और फिर वर्ल्ड को दे देते हैं, आप enjoy करो, you have all the joy, all the happiness, so we give it to the world to enjoy, right? So मुझे लगता है कि आर्ट की appreciation उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, especially in Pakistan. Like when I exhibit internationally,
or when I took my work to England for that matter, हमारे ज़्यादातर clients वहाँ के होते, even India for that matter, मुझे लगा बहुत ज़्यादा appreciation मिली है और थोड़ा सा as art room मैं लोगों को educate कर रही हूँ into things that are like life stories, like I said, कि आप हमारे पास हमारी खताती बहुत ज़्यादा मशहूर है, my horses are my cash cows, they sell a lot, but the forte that I do is actually I'm trying to tell people that, you know, if for instance हमारे पास clients आते हैं, वो कहते हैं, अभी भी आए हुए हैं पीछे, और वो कहते हैं कि हमने घर बना लिया और हमारे ये सोफे हैं और ये हमारा डाइनिंग रूम है, तो हमें इसके साथ कोई मिलती जुलती पेंटिंग दे दे. That's such a turn off. You should buy a painting and that should actually set the vibe of your whole entire house. Because you know, I heard someone exactly, मतलब देखिए, jewelry, carpets and paintings, I think ये तीन ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपनी जनरेशन को पास ऑन करते हो और ये हमेशा के लिए रहती है. तो आपको पेंटिंग से घर की वाइब सेट करनी चाहिए. ये नहीं कहना चाहिए आर्टिस्ट को आके कि हमारे पास लाल सोफे हैं तो लाल पेंटिंग दे दें. आई थिंक that's the most annoying thing that I've seen. But what I am playing my part is, एक तो मैं emerging artists को बहुत स्पेस देती हूँ. My gallery is open to all the emerging artists. I ask them to come. अगर मैं किसी तरीके से उनका मेंटोर कर सकती हूँ, उनको अपनी गैलरी में जगह दे सकती हूँ, तो मैं उनको कहती हूँ आए, ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप इंजॉय करें, आप जो आपको सही लगता है आपने यहाँ पे लगाना है आप करें. And if I think they're financially struggling, तो मैं जो उसकी assistance भी कर सकती हूँ, I try not to cut my commission. That's one thing I do because I also think कि जब मैं grow करने की कोशिश कर रही, अभी तक कर ही रही हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत male dominant मेरी galleries इर्द गिर्द थी. तो as a woman मुझे थोड़ा सा लगा था कि difficult है, but then I let go of it. Also, I am educating people again, like अपने लिए कुछ ऐसा काम बनाएं जिससे पूरी जिंदगी रख सके. खाली ये ना बनाएं कि मैंने किसी के घर में देखा था, या क्योंकि घोड़े जो हैं वो पावर एंड डिग्निटी शो करते तो हम एक घोड़ा खरीद लेते. नहीं, प्लीज वो बनाएं जिससे एफिलिएट कर सके, क्योंकि आपने रोज उस पेंटिंग के पास वापस जाना है. You have to fall in love with the art piece to enjoy it. Amna, which city, in your opinion, is the art capital of Pakistan? Do you think it's Karachi? Do you think it's Lahore? You've asked this amazing question, और मुझे सबसे equally मोहब्बत है. I think Karachiites are really cool. They're very professional. They have a great sense of art. I was in the Karachi Biennale and I really enjoyed it. But Lahore, for me, I was there in the walled city 2 days ago. I think over the weekend I had a full day shoot. तो मैं जब फिर रही थी, मैं सोच रही थी, you know, it reminded me that it was hammering in my head that Lahore is so full of culture, heritage, art, music, poetry, architecture. So for me, वो कहते हैं ना, Lahore है. So I love my city. So you're from that side. ठीक है. I think a lot of people get away with it by saying कि Lahore है. चलो, that is enough. Like that is enough said. Yeah. Okay. No, honestly, it does have a lot of art and culture. You're absolutely right. You're absolutely right, because it has बहुत ही rich culture. How do you think कि Karachi और Lahore का clientele और taste differ करता है? I think कि बहुत ज़्यादा, sorry, but लाहौर के लोगों को ज़्यादातर होता है कि हमारा आर्ट हमारे इंटीरियर से मैच करे, ठीक है, and which I don't enjoy a lot. When I find people in Islamabad and Karachi or international like audience, they give me my creative space. वो हम मुझे अपने do's and you know do करो ये ना करो, do's and don'ts नहीं कहते, वो लिस्ट आउट कर देते हैं, अपना कुछ डायमेंशन दे देते हैं, अपने कुछ फेवरेट प्रोजेक्ट्स का you know कुछ जॉनरा ऑफ आर्ट बता देते हैं, मीडियम बता देते हैं, इवन बजट बता देते हैं, पर मुझे अपनी क्रिएटिव स्पेस दे देते हैं. That's what I enjoy. And then I think then when I have my creative space, then I make something really good. Okay, so it actually depends on कि अगर कौन जो भी client आपको creative space दे आप to play with. हाँ, बिल्कुल. Okay, fair enough. I mean, I think that's fair enough. Because लोगों को जो मेरे पास आते हैं उनको लगता है कि I'm very expensive. You know, I'm not cost effective. But that's actually not a right. ये सही बात नहीं है. हम लोगों ने सीरीज निकाली हुई होती हैं 25K, 50K. आपकी पसंद अफोर्डेबल प्राइस पे हम आपको बना के देंगे. बस मेरी ये शर्त होती है कि आप मुझे मेरी क्रिएटिव स्पेस दें. मैं आपको आपकी पसंद का काम बना के दूं. That's actually fair. That's very fair. Why would people have a problem with that? I wonder. Yeah. Okay, so I have another question, which I just want to know कि because artist की community जो है, फिर भी I mean we ऐसा नहीं कि हमारे पास artists थे ही नहीं. We have had them,
but उनकी appreciation ऐसी नहीं होती. So do you feel that at any point in time you had a difficulty being taken seriously because of what you do? Like you said earlier, Amna, just because when you founded the art room, so there were little speculations of what are you doing? Yeah, आपने ऐसे तो नहीं कर दिया. So I mean, because we all have that crazy idea that has been challenged by people. So I just want to know if at any point in time did you have a problem being taken seriously because you are an artist, and there aren't many around like you. I think आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है, बट ये जो हमारे सोसाइटी का एक माइंड सेट है ना, एक तो जो क्रैब मेंटालिटी है वो नहीं होनी चाहिए. ये एक चढ़ है उसको भी नीचे खींच दो, ये एक बहुत चीज है, ये हम सब में है. एंड दूसरा मुझे लगता है कि ये एक माइंड सेट है कि इफ शी इज अ वुमन और शी इज मैरिड एंड शी इज अ मदर और शी इज फ्रॉम अ गुड फैमिली एंड शी इज डूइंग गुड फॉर हरसेल्फ, लाइक बाय गुड आई मीन अगर लोगों की सोसाइटी वाइज सेट है, तो फिर ये जो है ना सिर्फ पैशन है. ये एक मेरा क्वेश्चन मुझे बड़ा तंग करता है और मुझे लोगों को समझ आता है कि एक प्रॉपर प्रोफेशन है. सो आई थिंक टू कम here at work every day, devoted to your work and consistent and hardworking, and then finally अल्लाह ताला की तरफ से भी लक होती है obviously. बट मुझे ये लगता है कि मुझे एक ये फेस करना पड़ा था बहुत ज्यादा कि लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक मेरी हॉबी है या पैशन है. लोगों को ये समझ नहीं आता कि इसमें हम कितना ज्यादा अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं. आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पीपल टू रियलाइज, बी दैट मेरे क्लाइंट्स हो या नॉर्मल ऑडियंस हो, कि आर्टिस्ट अपना सब कुछ अपने काम में इन्वेस्ट करते हैं. इट कैन नॉट ओनली बी अ पैशन और अ हॉबी, इट्स अ प्रॉपर प्रोफेशन. इट्स लाइक अ 9 to 5 जॉब. मेरी तो वैसे 10 to 10. Okay, so what's that one big challenge that you faced when you came up with the art room? What was that one big challenge you had to face? I think ये था कि मुझे सबसे पहले I come from a very supportive family. They were very kind to me, my parents and everyone for that matter, my friends, even for that matter my son. But मुझे लगता है कि ये एक मेरे लिए चैलेंज था कि लोगों को ये दिखाना कि ये शौकिया नहीं है और इधर अपना नाम मेंटेन करना, अल्हम्दुलिल्लाह. और डेली इस जो कंसिस्टेंसी होती है ना अथिया, यहाँ तक पहुंचना बहुत आसान होता है मुझे लगता है ऊपर तक, बट उधर खड़े रहना रोज मुश्किल होता है, क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है आपको नीचे गिरा दें. सो मुझे लगता है कि अभी तो मैं सोचती नहीं, अभी मुझे लगता है कि another 10-15 years लगेंगे कि कहीं जाके मेरा कुछ नाम बनेगा. अभी मैं सिर्फ काम कर रही हूँ, मैं नहीं सोचती कि मैंने कुछ कर लिया, मुझे लगता भी नहीं मैंने कुछ किया, मुझे लगता ही नहीं कुछ किया. बट मुझे एक्चुअली लगता है कि मैं डेली काम करूं और इतना काम करूं कि कुछ सालों बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे लगे कि हाँ मैंने कुछ इतना सा पॉइंट इन पाकिस्तान या इतना सा लाहौर में कुछ ऐड किया, कुछ हैप्पीनेस, कुछ जॉय, मैंने अपना पर्पस कुछ डाल दिया. ये मैं सोचती हूँ. एंड आई थिंक अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है. मे बी इन अदर 10-15 years डाउन द लेन आई विल हैव सम recognition के लोगों को लगेगा कि मैं कुछ सोसाइटी को भी वापस दे दूं. No, Amna, personally, you are doing good for yourself, and inshallah, you have a long way to go. And perhaps down the lane, jahan baat kari, perhaps I'll meet you there and I'll remind you. Remember, we had this interview and you said this, so look at where you are. So that being said, I have another one of those techie questions for you. So society needs. आपके questions वैसे बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है. और मैं इतना कैंडिडेट बोल रही हूँ, बाद में वो अलग बात है सोचने की मैंने कितना बोला है, बट मुझे बहुत मजा आ रहा है. You have good questions. Really appreciate it. So society needs art, but the artist needs society support more. Do you agree? मुझे लगता है symbiosis, you know. वो आपको what more can we do to support artists? कहते हैं ना बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, वो वाली बात है ये. We of course the society needs art, but we also have to stay in the norms and उसके अंदर रहते हुए हमें करना होता है. हम इतना ज्यादा उस तरह से नहीं चल सकते. अब मेरे पास जो आर्ट लोग आते हैं, क्लाइंट्स, ऑब्वियसली वो आते हैं तो मैं चल रही हूँ. सो ये नहीं होता कि सोसाइटी को भी आर्टिस्ट की जरूरत होती है. दैट्स आई एग्री, बट आर्टिस्ट को भी सोसाइटी की जरूरत होती है. बट आई थिंक कि आप इट्स वही वाली बात, इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. बट आई रियली बिलीव कि अगर एक आर्ट का कल्चर बढ़ता है तो जनरली आपकी पूरी सोसाइटी बढ़ती है और आपका पूरी कंट्री डेवलप होती है. बिकॉज आर्ट इज सच अ थिंग, इट्स वेरी, मे बी आई डोंट नो सब ऐसा फील नहीं करते हो, बट मुझे लगता है कि अगर आप आर्ट में इन्वेस्ट करते हैं या आप कल्चर अपने हेरिटेज में इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली आपका पूरा मुल्क तरक्की करता है. So what new is happening at the art room?
What new is happening? So अल्हम्दुलिल्लाह पेंटिंग तो हमारा एक मेन है, वो तो चलता ही रहता है। उसके बाद अलावा जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने आर्ट फर्नीचर विच इज़ बहुत मज़े की चीज़ है, इंशाल्लाह आप हमारी फीड पे वेरी सून देखेंगे। हमारी इस हफ्ते शूट्स है और वो सारी फीड पे लगती जाएंगी, इंट्रोड्यूसिंग मर्चेंडाइजिंग एंड आर्ट फर्नीचर एंड देन ऑल्सो लाइक आई सेड स्कल्पचर एंड देन ये एक बड़ी खूबसूरत सी थ्रो है जो मैंने अभी फिलहाल ठंड में अपने ऊपर ली हुई है, बट दिस इज कमिंग, you'll see my collection launching inshallah in January 2023. What is it that you enjoy painting the most? Like, what would be a treat to yourself? So what I enjoy and the treat to my own self would definitely be जो मैं commission करती हूँ art, जो मैं specifically अपने clients के लिए बनाती हूँ. Let's say you're my client, I would invite you to my studio. I would have a nice cup of coffee with you और कुछ दिल की बातें, और उसके बाद मैं questionnaire आपको दूंगी जिसके अंदर बहुत personal बातें होंगी, जो personal diaries नहीं होती जो हम जैसे we used to make when we were kids. उसमें आपकी स्ट्रगल्स होंगी, आपसे रिलेटेड सारे सवाल होंगे, आपको खाने में क्या पसंद है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी एग्नी, आपका जॉय, आपको कलर कौन सा पसंद है, आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स क्या थी, सब कुछ जो आपसे रिलेटेड होगा। और फिर जब आप एक्चुअली वो पेंटिंग मैं बनाऊंगी तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपना क्लाइंट ही बना दिया। ऐसा थेरेप्यूटिक होता है कि मैं जब वो पेंटिंग बना रही होती हूँ, अभी मेरे लिए रिसेंटली ये बड़ा एक हमारा होता है, मंथ में एक दफा मैं बनाती हूँ, इसमें मेरा बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत थॉट प्रोसेस जाता है। सो ही हैड हिज very different life. He had his parents who passed away. He had ups and downs of business. उसके specific colors थे. So मैंने 11 colors choose किए और उसकी life की ups and downs और जिंदगी मैंने पूरी बनाई। और जब वो लेके जा रहा था ना, तो उसको लग रहा था कि वो अपना आप लेके जा रहा है। तो वो मुझे बहुत मजा आता है। ये मैंने actually this is for myself. This is art not for sale, and I called it अधूरी ख्वाहिशें। because मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की, सबकी लाइफ की हर चीज पूरी नहीं होती, और मुझे लगता है कि ये एक मैंने अपने लिए बनाई थी एंड आई गेव सॉर्ट ऑफ गिफ्ट टू माई सेल्फ, माई सोल। एंड वही वाली बात, मेरा एक बड़ा फेवरेट लाइन है जिस पे आई वुड लाइक टू एंड, वो ये है कि सब मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने का मजा देती। I would really want to I want to end it with an applause. Thank you so much. I mean, I really, really enjoyed talking to you. You're a very, very wonderful person.